So first of all, a very warm welcome into our first day of the live session of Revit MEP. So as we told and as we promised, we are getting started for the Revit MEP live session, and from today onwards, we are getting live for the like daily training होगी. यही same timing रहेगा 8 p.m. to 9 p.m. and this will be the whole timing. Okay, so first of all let me show you my presentation because it will be 2 days, like आज का और कल का हमारा 2 days का हमारा theoretical session रहेगा where we discuss about the Revit software mainly. Okay, MEP will be the focus. Yep, it is the main focus because हम जो Revit MEP जो है उसके अंदर MEP मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है एज वी ऑल नो. बट इफ़ यू आर ए MEP डिज़ाइनर, ठीक है, आप एज एन साइट इंजीनियर के तौर पे वर्क कर रहे हैं, कोई भी जो भी आप कर रहे हैं काम, you have to understand the software first. Okay, you have to understand its basics, you have to understand its concepts. Okay, then you can work on the main software. Okay, so let me share my screen. So we are getting started for this presentation. I hope some of you have seen this presentation before as well. But our Yeah. main focus is all about the software and is concept, and it will be going to for be maybe hour long and maybe more than that. But time is not barrier here. Okay, our main focus is to provide you the best of the best, and I promise you in the maybe in the last of our course I can give me my best of मैं आप लोगों को अपना बेहतरीन दे पाऊँ और and you may feel satisfied. Okay, okay, people are still joining. So here is a question for everybody, like what is Revit MEP? This is the basic question, like Revit MEP होता क्या है? Okay, I know it sounds very weird. I'm starting from you side. तो आप में से कौन कौन पहले तो मुझे Revit के बारे में बताना चाहेगा? What is Revit? Revit software, only Revit, not MEP, only Revit. Anybody? Sir, Revit Revit is a जो है BIM ना अपना software. Please one by one, बिल्डिंग इंफॉर्मेशन सॉफ्टवेयर. building information modeling software. Okay, one by one please. ज़्यादा ऐसे जल्दबाजी नहीं करनी है. सर इसमें हम लोग आर्किटेक्चर वर्क करते हैं, स्ट्रक्चर वर्क करते हैं और MEP का वर्क करते हैं. ओके ओके ओके, ठीक है. तो कोलैबोरेशन से सारा काम कर सकते हैं इसमें, ऑटोकैड की तरह, बस इसमें 3D भी होता है. ओके, anybody else? हेलो, और कोई कुछ बोलना चाहेगा या इट्स इनफ? रेविट MEP 3D मॉडलिंग के लिए यूज होता है. ओके ओके, ठीक है, 3D मॉडलिंग एंड लेट्स सी इन द चैट सेक्शन. ठीक है, सो व्हाट इज MEP? लेट्स do the question. Okay, so let's talk about the Revit software first. Okay, so Revit प्लीज़ कोई आपने अपनी माइक म्यूट कर लीजिए प्लीज़, इट्स माई रिक्वेस्ट. जब भी मैं आपको बोलूँगा माइक को अनम्यूट करने के लिए तभी आप अनम्यूट करें, अदरवाइज म्यूट द माइक फ्रॉम द होल सेशन. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. So what is Revit software? As you can see, Revit. Okay, give me a second. Somebody has joined. Okay, so what is Revit? Revit software is all about the building information modeling software. Okay, it's a BIM based concept software which is used for the 3D modeling work, 2D modeling, 2D drafting work. Okay, designing, analysis, documentation, detailing work, rendering. Okay, this is the basic definition of the Revit. Okay, इन व्हेन यू गो जब आप जाएंगे विकीपीडिया के ऊपर, अगर आप सर्च करेंगे रेविट के बारे में तो एक तरीके से एक हमें बेसिक डेफिनेशन मिलती है कि एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर हम 2D 3D डिज़ाइनिंग एक साथ कर सकते हैं कोलैबोरेटिवली, एंड डिज़ाइनिंग का काम इसमें होता है, आर्किटेक्चरल वर्क इसमें होता है, स्ट्रक्चर वर्क होता है. दिस इज़ द ओवरऑल द बेसिक डेफिनेशन ऑफ द रेविट सॉफ्टवेयर. बट द थिंग इज़ द रेविट सॉफ्टवेयर इज़ मोर देन अ BIM सॉफ्टवेयर, यानी कि रेविट जो सॉफ्टवेयर है वो एक BIM सॉफ्टवेयर है, दैट इज़ द बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग सॉफ्टवेयर. ओके, so let's understand the BIM first. It is a very important part, क्योंकि अभी अगर हम देखें
तो BIM एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैं बाकी तो इन चीज़ों को छोड़ रहा हूँ, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। लेट्स डिस्कस द BIM फर्स्ट, बिकॉज BIM इज़ लाइक इट्स लाइक द बैकबोन ऑफ योर सॉफ्टवेयर। आप कुछ भी देखेंगे इसमें, लाइक यू आर वर्किंग इन द सॉफ्टवेयर एंड यू आर सीइंग लाइक डक्स, यू आर सीइंग, यू आर डीलिंग विद द सर्विसेज, whatever it is, it is everything is BIM. Okay, let's understand the BIM. What is BIM? As a Revit learner, as a Revit modeler, you are जैसे कि जब आप जाएंगे कंपनीज के अंदर, you should know about your software capabilities, that what it can do. Okay, so basically BIM or the building information modeling is a concept in which the physical model, whatever you're going to execute in the real life, it is made into the digital space. ठीक है, मैं ये बहुत ही लेमन टर्म्स में बता रहा हूँ कि आपका जो फिजिकल मॉडल है जो बनने वाला है, ठीक है, उसका एक डिजिटल रिप्रेजेंटेशन बनेगा इस सॉफ्टवेयर के अंदर। ओके, कि अगर आप मान लीजिए यू आर गोइंग टू डिज़ाइन HVAC सिस्टम, okay, so before designing it, before doing it into the practical world, you have to design it first, that what are you have to see the errors where it is coming, ठीक है, what it how we can design, and what are the options, how we can reduce the cost, how we can manage the cost, and how to schedule it, how we can create the detailing. All this stuff you can do in the BIM. Okay, so BIM provides you everything. Okay, फ्रॉम अगर मैं बताऊं तो BIM वो चीज़ कर सकता है, अगर हम देखें फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ द प्रोजेक्ट, बिल्कुल फ्रॉम द स्क्रैच टू द डेमोलेशन ऑफ द प्रोजेक्ट। ओके, इट क्रिएट्स द लाइफ साइकिल ऑफ द होल स्ट्रक्चर। आप कुछ भी बना रहे हो, यू आर डीलिंग इन द आर्किटेक्चरल systems, you are dealing in the you are working with the structure, or you are working with the MEP services, whatever it is, you are dealing with everything is a BIM. Okay, and BIM provides you one biggest thing that no software can you provide. कोई भी सॉफ्टवेयर प्रोवाइड नहीं करेगा which is not a BIM software, that is the collaboration. Revit software it's all about collaboration. In future I don't know, अभी हाल ही में ये चीज़ अभी खैर ये ट्रेंड में धीरे धीरे आ रही है, but in future the collaboratively part, that is the work sharing, which is going, we are going to cover in our last days of our courses, that completely हम बात करेंगे about the work sharing and the collaboration of the three system parallelly, that is the mechanical, electrical and plumbing. We all know that these three systems are very different, you know sorry, mechanical system is different, electrical system is different, and plumbing system is different, and including with the firefighting systems. So whatever it is, the thing is ki we are going to focus on the whole system. We have the building, we have our systems, how to design it, we have analysis part. Okay, let me ask you one question. uh, Here we can do a debate. I've seen many comments like ki CAD is outdated. Some of you have told CAD is not आज के समय के अकॉर्डिंग नहीं है, ठीक है, CAD is on its own place, it is good, but BIM is on the next level. If we compare these both, आप में से कौन मुझे बता सकता है कि CAD में और BIM में क्या फ़र्क हो सकता है? Anybody? सर कैड और BIM में तो काफ़ी फ़र्क है, क्योंकि कैड जो है वो बीम सॉफ्टवेयर में नहीं आता है, राइट? और इसमें क्या है, कोलैबोरेशन नहीं हो सकता कैड में, और इसमें कॉस्ट कटिंग कैसे करेंगे, तो वो सब चीज़ें ऑटोमेटिकली भी नहीं होती हैं। यप और रेविट में ये सब चीज़ें होती हैं। ओके, सो मैनी बाकी बोलिए 3D का भी काम उतना अच्छा नहीं हो पाता है कैड में, जो 2D ड्राफ्टिंग ही होती है। यस ओके, बस इतना ही था। ओके, एनीबडी एल्स? टाइम सेविंग रेविट में काम करेंगे तो टाइम सेव होगा सर। ओके, टाइम सेविंग, और एनीथिंग एल्स? डॉक्यूमेंटेशन नहीं कर सकते ऑटोकैड में। ओके,
So, main points are, as I have heard everything from you guys, that जो Revit है उसके अंदर हम सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन वर्क हम कर सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं, ठीक है, वर्क शेयरिंग का पार्ट हमारे पास है। ओके, अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि हम पहले कैड सीख के आए, कैड में हमने सिर्फ प्लानिंग करी, वी हैव टू अंडरस्टैंड द ड्राफ्टिंग थिंग फर्स्ट, क्योंकि रेविट को आप तभी समझ सकते हैं जब आपको ऑटोकैड अच्छे से आए। आप में से बहुत से लोगों ने ऑटोकैड पहले से कर रखा है एंड देन यू हैव टू शिफ्ट टू द रेविट। आई नो ऑटोकैड इज इंपॉर्टेंट, बट आफ्टर दैट यू हैव टू लर्न द रेविट। ओके, अब रेविट जो है, रेविट हैज़ द कैपेबिलिटीज टू हैंडल ऑल द सिस्टम्स। ओके, कैड के पास क्या है, कैड कैन ओनली डू द ड्राफ्टिंग वर्क। ओके, कैड के पास सिर्फ ड्राफ्टिंग एबिलिटीज है। ओके, इट कैन ओनली प्रोवाइड यू द हम वहाँ पे प्लान, सेक्शन, एलिवेशन, इट इज़ वेरी डायनेमिक। ओके, इट इज़ वेरी डायनेमिक, लाइक इसके अंदर हम मैकेनिकल के भी ड्राइंग्स बना सकते हैं, प्लम्बिंग ड्राइंग्स बना सकते हैं, चाहे वो कोई मशीन का पार्ट डिजाइनिंग हो गया, एवरीथिंग वी कैन ड्राफ्ट इनटू द AutoCAD सॉफ्टवेयर, बट देयर आर सम लिमिटेशंस, वी कांट एनालाइज एनीथिंग इनटू दैट सॉफ्टवेयर। ओके, मान लीजिए अगर हमें कोई चीज़ डिज़ाइनिंग कर लिए, लेट्स सपोज वी कैन टेक द एग्जांपल ऑफ MEP। आप MEP का सिर्फ प्लान बना सकते हो, दैट हाउ द डक्स कैन गो, डक का पूरा प्लान बना सकते हैं, विच इज़ गुड थिंग, बट what are the conditions, what are the conditions, what are the heating and cooling load calculations, ये ना, मतलब कहने का मतलब ये है कि जो कैलकुलेशन वाला पार्ट है, जो एनालिसिस वाला पार्ट है, वो कम्प्लीटली यहाँ से मिस आउट हो जाता है। we can't do the scheduling, we can't do the estimation and the quantity work। okay, so जो भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें हम CAD में नहीं कर सकते, there are the limitations, that's why we prefer the advanced software। okay, advanced software has some advanced features, like as I told about the BIM is the next gen technology, I can say currently in the whole world। BIM is on the second level। I want to ask a question, आप में से मैं सवाल पूछना चाहूँगा आप लोगों से कि जो BIM है वो कितने लेवल्स में डिवाइडेड है, हाउ मैनी लेवल्स आर देयर अवेलेबल इन BIM? अगर आप में से किसी ने BIM अच्छे से पढ़ा है तो आई एम जस्ट आस्किंग। सर 5 में ओके, LOD थ्री टाइप्स में 100 और 200 like 500 up to। ओके, सो वेयर वर वी, हाँ, तो आई वॉज टॉकिंग अबाउट द लेवल्स ऑफ द BIM। ओके, तो BIM का जो लेवल है, ठीक है, देर आर ओनली 3 लेवल्स आर अवेलेबल करेंटली, तीसरे लेवल पे भी काम चल रहा है, ठीक है। देर इज़ लेवल फर्स्ट, देर इज़ लेवल 0। ओके, आफ्टर दैट देर इज़ लेवल 1 and then there is level 2 and last one is level 3। okay, level 0 is very basic, very जहाँ पे हम काम कर रहे हैं on the CAD softwares। okay, completely drawing and all that stuff। okay, when it's come to the level 1 we have upgraded to the 3D modeling softwares, जहाँ पे हम 3D modeling का काम कर रहे हैं। okay, then we are upgraded to level 2 which is little bit very advanced, ठीक है, जहाँ पे हम completely सारा काम कोलैबोरेटिवली कर लें, हर कोई पर्सन, हर कोई जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स है वो सब एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं, विच इज़ लेवल 2 एंड लेवल 3 इज़ अंडर डेवलपमेंट। ओके, विच इज़ गोइंग टू बी वेरी एडवांस्ड। ठीक है, लेट मी टेल यू वन थिंग, इन इंडिया वी आर ओनली एट लेवल 1 इन अ वेरी फ्यू केसेस, लेट मी टेल यू, बहुत कम ऐसा होता है कि कंपनीज में लेवल 1 तक ही अपग्रेड हुआ हो, वरना आई एम सॉरी टू से वी आर एट वेरी लो लेवल, वी आर एट लेवल 0। इफ़ आई टॉक अबाउट दुबई, इफ़ आई टॉक अबाउट डेवलप्ड कंट्रीज लाइक जापान and UK, United Kingdom, USA, they are at level 2 and they are upgrading themselves up to level 3 because अगर आप वहाँ का construction method देखेंगे and if you compare to India, there are too much difference। they are working with the latest technologies। okay, they are connecting with the real time clients। तो वहाँ पे आप देख सकते हो कि collaboratively काम होता है वहाँ पे, हर कोई प्रॉपरली काम कर रहा होता है, लाइक चाहे वो HVAC डिपार्टमेंट हो, चाहे वो इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट हो, चाहे वो प्लम्बिंग डिपार्टमेंट हो, देयर आर नो क्लैशेस। ओके, दैट्स वाई द कंस्ट्रक्शन वर्क जो है वो थोड़ा सही से होता है बाकी कंट्रीज़ में एज़ कम्पेयर टू इंडिया, बिकॉज वी हैव सीन मैनी टाइम्स कि प्रोजेक्ट डिले होता है हर बार। ठीक है,
तो जो प्रोजेक्ट डिले का जो दिक्कत है, ठीक है, वो इसलिए होता है बिकॉज देर इज़ नो कोलैबोरेशन. जब तक कोलैबोरेशन नहीं होगा वी कांट एग्जीक्यूट एनीथिंग. ओके, सो देयर इज अ मैसेज. ओके, यस, इंडियन सोशल एक्सपर्ट्स, डू यू हैव एनी डाउट? You can unmute yourself or you can ask into the chat box. I guess doubt नहीं है उनको. Anybody else, किसी को कुछ पूछना हो अभी तक, या फिर चलो आगे बढ़ते हैं, बाद में देखेंगे. Okay, so I was talking about the levels of BIM. कि BIM के जो levels हैं, like from the level 0 we have seen the CAD work. Currently in India everything is running on the sheets, everything is running on the CAD softwares only. हर जगह पे आप देखेंगे CAD सॉफ्टवेयर ही यूज़ हो रहे हैं. जहाँ पे भी आप जाएंगे CAD सॉफ्टवेयर ही यूज़ हो रहा है, क्योंकि AutoCAD की बड़ी डिमांड है इंडिया में. लेकिन जब आप Revit के ऊपर आएंगे तो Revit इज स्टिल अपग्रेडिंग, बट there are some limitations. There are few projects which are working on the BIM very properly. अगर आप देखेंगे तो जो कंस्ट्रक्शन मेथड है वो बस कुछ ही प्रोजेक्ट्स में हमें देखने को मिलता है. लाइक करंटली इफ़ यू आर फॉलोइंग द लेटेस्ट प्रोजेक्ट्स, लाइक एग्जांपल के लिए मैं आपको दूँ, let's take the example of RRTS, which is officially constructed by the NCRTC. Okay, you know the Delhi to मेरठ रूट जो है पूरा, वहाँ पे जितनी भी बिल्डिंग्स बनी है वहाँ पे सारा काम किसी न किसी पर्टिकुलर कंपनी को दिया गया है. वहाँ पे ऐसे भी वहाँ पे सॉफ्टवेयर यूज़ किए गए हैं जो रेविट सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे हैं, लाइक जैसे KEC इंटरनेशनल है विच इज़ वर्किंग विद द BIM सॉफ्टवेयर्स. तो वहाँ पे जितनी भी प्लान्स है वो सारे BIM के थ्रू बन रहे हैं. और इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ अपडेट, अगर आप देखें तो इंडिया में करंटली सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट उसी का कंस्ट्रक्शन चल रहा है. तो जो भी MEP का काम हुआ है, स्पेशली विद द हेल्प ऑफ रेविट, दे आर बिल्डिंग MEP लाइक प्लम्बिंग, HVAC एंड एवरीथिंग. जो स्टेशंस बनने वाले हैं वहाँ पे, लाइक जो प्लम्बिंग का काम है, जो इलेक्ट्रिकल वायरिंग का काम है, वो सब उस सॉफ्टवेयर के थ्रू हो रहा है. तो यू कैन सी दैट व्हाट रेविट कैन डू. You can see that how Revit is working into the industry. Okay, so this is the power of Revit software. Okay, now let's come to the our main part, that is the whole conversation about the BIM कि BIM क्या कर सकता है. We can have a long talk about the BIM. Okay, because currently in this generation we are अभी it's the 21st century. We are doing new experiments into the construction industry. जो हमारी जो AEC इंडस्ट्री है उसमें लगातार अपग्रेड करते जा रहे हैं, और ये चीज़ हमें इंडिया में भी देखने को मिलेगी जल्दी. सो इफ़ वी अपग्रेड आवर सेल्व्स इनटू दिस सॉफ्टवेयर एंड वी नो व्हाट इट कैन डू, we can design, we can do analysis, what we can do, because the Revit software, the BIM software, it is not a software, it's a concept, and it's more than that. Some people think it is a software, some people think it's just a physical representation, okay, of your physical structure into the software, and or it's about the building data management. But it is more than that, okay, because it has the capabilities to run all the people into the main. हमारे पास एक central file रहेगी और उससे सब connected रहेंगे. Okay, that's the main thing. Okay, so let's talk about the subdivisions of the Revit. Okay, there are 3 basic divisions of this software. That is, the first one is Revit architecture, second one is Revit structure, and third one is Revit MEP, which we are currently dealing with. Okay, if I talk about the Revit architecture and Revit structure, let's discuss some little bit of basic thing. Revit architecture deals in the architecture work like walls, door, window, ceiling, roof, and all that stuff. Okay, so and any architect who is जो भी architect है वो सिर्फ खाली building designing में देखेगा. Okay, how the room will be placed and how the whole house, यानी कि जो भी residential हो, चाहे कमर्शियल हो, चाहे ऑफिस हो, वो अपने हिसाब से उसको डिज़ाइन करेगा विद अ शूटेबल वे, विद अकॉर्डिंग टू द रियल टाइम कंडीशंस.
स्ट्रक्चर का जो काम रहेगा वो रहेगा कम्प्लीटली डिज़ाइनिंग का, लाइक जो बिल्डिंग का जो स्ट्रक्चर है, लाइक बीम्स, कॉलम, स्लैब एंड ऑल दैट स्टफ, वो सारा काम उसका रहेगा, लाइक उसका डिज़ाइनिंग का, उसका एनालिसिस का, उसका रिपोर्ट जनरेशन का। ओके, सेम एज लाइक जस्ट लाइक MEP, बट इन दैट पार्ट लाइक फाउंडेशन कैसे डिज़ाइन होगी वो सब स्ट्रक्चर में होता है। नाउ मेन पार्ट इज कमिंग टू द MEP. Okay, let's discuss about it. What is Revit MEP? Revit MEP, as we all know, it's a building information modeling software which deals in the mechanical, that is the HVAC work, electrical, that is the effective lighting designing, and last one comes into the plumbing work, जहाँ पे हम plumbing का काम देखेंगे completely about जो भी हमारा like piping routing रहेगा, water supply, waste water and all that stuff, जो भी है सैनिटरी का काम है। अपार्ट फ्रॉम दैट देयर विल बी फायर फाइटिंग वर्क लाइक स्प्रिंकलर्स अप्लाई करना, उसका लाइक सेपरेट पंपिंग रूम वगैरह, दैट स्टफ वी आर गोइंग टू डिज़ाइन इनटू द MEP. दैट्स आवर MEP सॉफ्टवेयर. ओके, एंड as you can see there is another definition of the BIM. Okay, BIM based software, okay, in which 3D modeling, analysis, data processing and works with the AEC regarding stuff. Okay, so as we discuss about the BIM, okay, completely we have discussed, this is the BIM workflow. Okay, as I told you that BIM is everything regarding to the building. Okay, how the building will be start, लाइक उसका जो बनाने का पूरा तरीका है वो हम देखेंगे फ्रॉम द बेसिक, फ्रॉम द स्क्रैच. हमारे पास AutoCAD का प्लान आएगा, और मे बी इट विल बी अ PDF, और मे बी इट विल बी अ Revit फाइल, anything else, we are going to link it. Okay, after that we are going to start working on it. Okay, from the from the scratch we are going to take the spaces and applying that, and after that we are going to do heating and cooling load calculation and all that stuff we are going to do, and after that we are going to generate and report or everything else, and you can see that what kind of things we are going to do this thing. Okay, this is the BIM workflow from the starting, from the scratch to the analysis, documentation, and repair maintenance and everything like renovation, repair management and conceptual design. Everything is going to do this. Okay, from the start, from the building, okay, from the documentation work to the demolition of the project. Okay, so this is the whole workflow of the BIM. This is the whole workflow of your software. Okay, not only Revit but जो भी सॉफ्टवेयर आपके BIM से रिगार्डिंग है उन सभी में ये सेम वर्कफ्लो कॉमन रहता है. ओके, next, so let's talk about some little bit history about the software, that how it is started. Okay, so that was the about the BIM and everything else we have discussed. Let's talk about the history. What is the history, where it started? So basically it was initially developed by PTC company, Parametric Technologies Corporation, and it was named as Charles River software when it was initially released, but after that in year 2002 it was renamed as the Revit Technologies Corporation in year 2000, and after that it was purchased by Autodesk company. Okay, and after that Revit structure was introduced in 2005, and in 2006 Revit MEP was introduced, and rest is history. Okay, so this is the little bit of the basic and the basic overview part of our Revit software. Okay, let's talk about its features. Okay, I know we are going to learn this software. Okay, but why we are going to learn this? हम क्यों सीख रहे हैं इस सॉफ्टवेयर को? कुछ तो बात होगी इसमें ना, अगर हम सॉफ्टवेयर को सीख रहे हैं या फिर जो पूरी इंडस्ट्री वो यूज़ कर रही है तो कुछ तो इसके अंदर बात होगी. दैट्स वाई दिस सॉफ्टवेयर हैज़ अ डिमांड. इस सॉफ्टवेयर की डिमांड है, इस सॉफ्टवेयर को लोग यूज़ कर रहे हैं, रियल टाइम प्रोजेक्ट्स में इसका यूज़ हो रहा है. सो व्हाट आर द रीजंस कि ये सॉफ्टवेयर यूज़ हो रहा है? ओके, हियर आर द रीजंस. लाइक वर्क शेयरिंग, एज आई टोल्ड दैट BIM ऑल थिंग्स जो हमने अभी तक डिस्कस किया अबाउट द BIM, वो सब के सब फीचर्स रेविट सॉफ्टवेयर पर अप्लाई होते हैं. लाइक वर्क शेयरिंग, okay, which is a collaborative work. As I told, without collaboration we can't execute anything. Number 2, documentation. Okay, number 3, workflow. Workflow is very easy. Analysis, okay, fabrication work, import and export, productivity. Okay,
सो दीज आर द फीचर्स, एंड ये सिर्फ इतना ही नहीं है, इससे कहीं ज़्यादा हमें देखने को मिलता है, बिकॉज वी कैन डू द जो उसका पूरा ड्यूरेशन है वो हम इसमें देख पाते हैं. ओके, लाइक द डिटेल्स, लाइक द रियल टाइम रिपोर्टिंग, वी कैन सी दैट. ओके, सो इसके जो फीचर्स हैं वो इसे एक बेहतरीन सॉफ्टवेयर बनाते हैं. इफ़ यू सी अदर सॉफ्टवेयर्स लाइक SketchUp or 3ds Max, these are just designing, they are just designing. Okay, they are not providing the details. Okay, details like quantities of any like material which is going to be used. Okay, because the estimation and costing is also important during the construction work. बिकॉज कोई भी जब भी हम प्रोजेक्ट बनाते हैं तो उसके अंदर कॉस्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, एनी ऑफ द क्लाइंट दे नीड देयर कॉस्ट शुड बी मैनेज वेरी प्रॉपरली. तो जो कॉस्ट इफेक्टिविटी है, जो कॉस्ट कंट्रोल है, हम चाहते हैं कि हमने मान लीजिए 3,000 करोड़ का कोई प्रोजेक्ट रखा है, 4,000 करोड़ का कोई प्रोजेक्ट रखा है, तो वी वांट दिस मनी टू बी सेव्ड as we can, and it should be used very properly but with a certain manner. Okay, ऐसा नहीं है कि प्रोजेक्ट हम बना रहे हैं एंड प्रोजेक्ट एक्सीड आफ्टर दैट, तो पूरा जो कॉस्ट है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि वी नो टाइम टू टाइम कॉस्ट इज़ नॉट द सेम. ओके, हमें पता है कि आज के समय में देखिए बहुत सारी चीज़ की कॉस्ट बढ़ रही है, महंगाई भी धीरे धीरे जैसे बढ़ रही है, तो कंपनीज वांट their cost should be controlled or it should be moderate, ताकि वो जो हमने जो प्रोजेक्ट इसके अंदर हम डिज़ाइन करने वाले हैं वो उसके अंदर ही रहे, उससे बाहर एक्सीड ना कर जाए. तो वी नीड दैट सॉफ्टवेयर विच कैन कंट्रोल दिस थिंग. सो आई गेस ऐसा कोई प्रोजेक्ट नहीं, ऐसा कोई सॉफ्टवेयर नहीं है अभी तक जिसमें ये चीज़ ना हो सकती हो. सिर्फ एक ये है, एक रैबिट. इसके अलावा जो BIM से रिगार्डिंग सॉफ्टवेयर हैं उसी में ये काम हो सकता है, and only BIM can execute this thing. ठीक है, बिकॉज आप में से मुझसे बहुत से लोग एग्री करेंगे कि कॉस्ट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रखती है इन टू आवर प्रोजेक्ट. हाउ मैनी ऑफ यू एग्री विद दिस? इज दिस यप, फराज अहमद, यस. Is this session recording available? Yes, it will be available and it is currently into the record as you can see. हाँ, yes. Cost is very important into any project and quantity is very important, क्योंकि quantity तब जब निकलेगी तो उसके बाद ही हम cost decide कर पाएंगे. And in every year cost is increasing. We can see that आज के ज़माने में हर चीज़ की cost धीरे धीरे बढ़ रही है. So every client need कॉस्ट जो है वो कंट्रोल हो. सो दे नीड अ सॉफ्टवेयर विच कैन कंट्रोल एवरीथिंग. इफ यू सी कैड कांट डू दिस. कैड कभी कर ही नहीं सकता ये काम. अगर हम चलो मैनुअली भी ले लेते हैं, लेट सपोज कैड कैन डू दिस थिंग, बट हाउ, कैसे करोगे उसके अंदर? क्या आप अलग से कैलकुलेटर लेके बैठेंगे? टेल मी. आप कैलकुलेटर लेंगे और फिर लगेंगे कि हाँ ठीक है चलो हम एस्टिमेशन करते हैं. लेट सपोज आप बिल्डिंग का पूरा एस्टिमेशन करने बैठे हैं, आप लेबर कॉस्ट निकाल रहे हैं, आप मटेरियल का कॉस्ट निकाल रहे हैं, एंड मतलब क्वांटिटी पहले निकाल ली, उसके बाद मटेरियल का कॉस्ट निकालने बैठे. ऐसे तो उसमें एग्री कैन रिकॉर्ड दिस सेशन. या इट इज़ करेंटली इन रिकॉर्डिंग. ये रिकॉर्ड हो रहा है, डोंट वरी. इट इज़ गोइंग ऑल्सो गोइंग टू अपलोड इनटू द ऑनटू द यूट्यूब एंड इनटू द ऐप एज वेल. ओके ओके, इट इज़ करेंटली रिकॉर्डिंग, डोंट वरी. ओके, हाँ. सो हम ये चीज़ मैनुअली कभी एग्जीक्यूट नहीं कर सकते, बिकॉज टुडेज टाइम इज़ ऑल अबाउट द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. वी हैव टू टेक दैट एडवांटेज, ओके, इन अ वेरी गुड वे. हम यही चाहते हैं कि हमारे पास जो टेक्नोलॉजी आई है हम उसका ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर यूज़ कर सकते हैं. ओके, सो हाउ वी आर गोइंग टू डू दैट? वी हैव द रिसोर्सेज दैट इज़ इन फ्रंट ऑफ यू, दैट इज़ द Revit सॉफ्टवेयर. सो Revit सॉफ्टवेयर can provide you everything if you want. That's why companies are preferring this. That's why it has a huge demand. That's why people are preferring to learn this software. That's why you are here to learn this software. It's all are connected, dots are connecting, you can see that. तो हर चीज़ कनेक्टेड है कि अगर आप प्रोजेक्ट के ऊपर काम करना चाहते हैं, अगर आप प्रोजेक्ट के ऊपर अच्छे से वर्क करना चाहते हैं,
You need a resource that can provide you your desired things. So this is the software for you. ओके, सो मेन जो चीज़ है अब तक हमने जो अब तक डिस्कस किया, ओवरऑल अगर मैं इसका पूरा निष्कर्ष निकालूं या फिर अगर हम इसका पूरा एक कंक्लूजन निकालें, दैट रेविट सॉफ्टवेयर इज़ इन द ह्यूज डिमांड, इट इज़ प्रोवाइडिंग द जॉब्स. ओके, अगर मैं स्कोप की बात करूं तो दैट रेविट सॉफ्टवेयर इज़ प्रोवाइडिंग यू जॉब्स ऑन दैट बेसिस. ठीक है, बहुत से कुछ लोग कहेंगे कि सर रेविट के बेसिस पर भी जॉब नहीं मिल रही है. इफ़ यू हैव दैट स्किल, number one, if you have that skill, if you have a knowledge, if you have an expertise, if you know everything about the software, if you have all over about जो भी आपका knowledge है regarding to the BIM, if you are update regarding to the latest technology, then अगर आप मार्केट में जाए, there are opportunities for you. एंड इन द स्टार्टिंग काफ़ी लोगों ने मुझसे पूछा था ड्यूरिंग द जब कोर्स स्टार्ट होने वाला था, तो पूछ रहे थे कि सर कॉस्ट क्या रहेगी जॉब जब हम जाएंगे, एज एन जब हम लगेंगे जाएंगे जॉब के ऊपर, तो क्या स्टार्टिंग सैलरी रहेगी. सी, number one, if you are going to work into an industry, and let me tell you, let me stop this thing. Okay, if you are going to start the if you are going to start as a Revit modeler or anything else, the starting salary of any fresher, I'm talking about the fresher, it is up to 15,000. Okay, if you have done AutoCAD and Revit, it is going to be 15,000. If you are very intelligent, it can go up to 20 or maybe up to 25. It depends on your degree or diploma or anything else. अगर आपने डिप्लोमा किया हुआ है या फिर वो किया हुआ है, तो कॉस्ट पे थोड़ा इफेक्ट पड़ सकता है. इफ़ यू हैव अ डिग्री, देन यू कैन यू हैव दैट एडवांटेज, थोड़ा सा मिल जाएगा कि आपको कि हाँ सैलरी आपकी 25,000 तक जा सकती है. ओके, सो आप में से कौन कौन अभी करेंटली एज एन MEP डिज़ाइन के ऊपर काम कर रहा है, लाइक कंप्लीटली प्रैक्टिकल वर्क? हाउ मेनी आर यू डूइंग? लेट मी नो. आप में से कौन कौन कर रहा है करंटली, लाइक HVAC का? शेख अब्दुल्ला, यस, शेख अब्दुल्ला एंड फ़रुद्दीन अंसारी, यस प्लीज़. सर भैया, तो मैं कर रहा हूँ अभी एज ए प्रोजेक्ट इंजीनियर कर रहा हूँ और डिज़ाइनिंग भी करता हूँ. एज ए स्टार्टअप कंपनी में हूँ मैं. ओके. तो इसमें डिज़ाइनिंग भी करता हूँ ऑटोकैड पे, और एग्जीक्यूशन का पार्ट भी. बेसिकली VRV भी कर रहा हूँ, एंड टेबल्स की डिज़ाइनिंग वगैरह करता हूँ. रेविट मैंने कोर्स ले रखा है रेविट का, तो उससे भी सीख रहा हूँ स्टार्टअप में. ओके, सो हाउ मच इज सैलरी इन बिटवीन, कैन यू टेल मी? My salary when I started, my salary was around 15K. Okay. But currently I take 22,000. Okay, 22,000. Okay, okay. Okay, so In Delhi. okay, okay. So there is a comment written here, that is Saeed from the Saeed Ashraf. Am I correct? Sorry, pronunciation. Sorry, मैंने आपका नाम गलत pronounce किया तो. So Revit starting salary is up to 12,000, and in Gulf there is 1 lakh plus. Okay. Farooq Akhtar, HVAC foreman, approx 65K in Abu Dhabi. In Gulf countries, let me tell you, in Gulf countries the जो पर कैपिटा इनकम है वहाँ की, वो थोड़ी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू इंडिया. ओके, 12,000 SR. ओके ओके ओके. इन इंडिया इट इज़ नॉट मच, ज़्यादा थोड़ी सैलरी नहीं मिलती, क्योंकि डिपेंड अपॉन द प्रोजेक्ट, एंड जितना बड़ा प्रोजेक्ट होगा उतना ही मे बी आपको ज़्यादा सैलरी मिल सके. इट डिपेंड्स ऑन द वर्क एज वेल. ठीक है, कि किस प्रकार का आप काम कर रहे हैं, and if you are delivering good, then you can get you will get the better salary, and if you are not doing good, so definitely you are not getting anything. In simple words, that you have to get the experience first. आप में से कौन कौन अभी fresher है? Let me ask you this question. How many of you are not doing any job, and currently they have a degree or diploma or currently going on? किस किस के पास नहीं है अभी? कौन कौन अभी है? हाँ, अंकित शर्मा, यस, आई एम वर्किंग एज MEP डिज़ाइन इंजीनियर. ओके,
So there are some professionals, but how many of you? Amrit Kumar. Okay. Yes, yes. Please, please, please. Yes, Ankit Sharma, please. Me. Okay. Faraz Ahmed, you are fresher. Yogesh. Okay. Okay. Give me a second. So, Shakir Ali. Sorry, I am pronouncing your name wrong. I am working as a fabrication engineer. Okay. ठीक है. Yes, Ankit Sharma, please ask your question. जो भी आपका सवाल है. If you can't answer through your mic, I left 1.3 job for the growth. Okay. What? So is it true कि आपने 1 लाख के अच्छा for growth? I am shocked. Okay, okay. So there are some person who are lefting job of only for growth. Quitting from the lakh rupees job. It is very wonderful. For Revit. Oh my God. So only for upgradation, right? ओके. ठीक है. काफ़ी सही है अगर आप लोग अपग्रेड करना चाहते हैं. एज आई टोल्ड यू दैट BIM is currently leading our AEC industry. I don't know how many of you related to the civil field or any other things else, but you have to understand their field as well, because if you want to work with them, क्योंकि HVAC डिज़ाइनिंग जो है या फिर जो इलेक्ट्रिकल वर्क का जो डिज़ाइनिंग है या फिर जो प्लम्बिंग वर्क है, it is going to design in a building. Maybe it is going to be commercial or residential or anything else. You are going to work with them. So first of all, you have to understand that field as well, little bit, not high much, or you are going to the depth or working with पूरा आप डिटेल में आप जा रहे हैं इतना नहीं, बट ओवरऑल यू हैव टू अंडरस्टैंड सम लिटिल बिट थिंग्स कि लाइक जो बिल्डिंग है किस तरह से उसमें डिज़ाइनिंग हो रही है. यू हैव टू वर्क विद दैम एज वेल. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग फर्स्ट अबाउट हाउ द ड्राइंग किस प्रकार से बनाई जाती है एंड ऑल दैट स्टफ, सो दैट यू कैन वर्क विद दैम एंड एग्जीक्यूट इट वेरी प्रॉपरली, क्योंकि डिज़ाइनिंग करने के बाद उस चीज़ का एग्जीक्यूशन भी होने वाला है. ओके. एंड इट इज़ नॉट कंपल्सरी. आप में से जो भी लोग अभी जॉब कर रहे हैं, दे नो दैट थिंग कि आफ्टर कंप्लीटिंग द होल MEP डिज़ाइनिंग, इट इज़ नॉट कंपल्सरी कि वो पास हो जाए. और अगर पास हो भी गया, चलो लेट्स सपोज कि कंपनी हैज़ पास दैट ड्राइंग एंड आफ्टर दैट वो गया. प्लीज़ मोहनलाल, आपका जो कैमरा है वो दिख रहा है, प्लीज़ उसको बंद कर दीजिए. यस. सो ड्यूरिंग द जॉब जब आप जाएंगे कंपनी में, तो वहाँ पे आप एक चीज़ देखेंगे कि कोई भी चीज़ फिक्स नहीं रहती है. अगर मान लीजिए प्लान बन भी गया, तो आफ्टर दैट यू कैन सी कि उसमें फिर भी एडिटिंग का काम चल रहा है. हाउ मैनी यू एग्री विद, जो लोग अभी काम कर रहे हैं वो चीज़ को समझेंगे ज़्यादा अच्छे से कि आफ्टर कंप्लीटिंग द डिज़ाइन जो आपके पास प्लान आता है, ज़रूरी नहीं है कि आप उसी के अकॉर्डिंग ही बनाओगे, क्योंकि रियल टाइम कंडीशंस के अकॉर्डिंग भी चीज़ें बदलती हैं. जो लोग जॉब कर रहे हैं, आप में से कितने लोग एग्री करेंगे? यस, एनीबडी? देयर आर कॉन्ट्रीब्यूशंस. यस, शायद शरीफ. यस. ओके. नबेल इवन शेख. बड़े से बड़े कंपनीज में भी ये श्योर नहीं रहता है कि भाई जो हम बना रहे हैं प्रैक्टिकल में वो सेम हो. Yeah, because after designing, because Revit is currently, आप पहले से ही जो है प्री प्लानिंग में इन्वॉल्व हैं, क्योंकि बिफोर स्टार्टिंग द प्रोजेक्ट, बिफोर स्टार्टिंग द कंस्ट्रक्शन, वी आर डिजाइनिंग फेज, वी आर इनटू द डिजाइनिंग फेज. बट इट इज़ नॉट श्योर कि वो चीज़ आपने डिज़ाइन कर दी और वो चीज़ परफेक्टली एग्जीक्यूट होगी. उसके लिए इन द रियल टाइम मे बी हैव टू विजिट द साइट, और आफ्टर दैट कंडीशंस you have to come back to on your system, you have to change everything. Okay. And you have to work with other people as well, so you have to understand that how we are going to change this and what are the क्या हम चीज़ें face करने वाले हैं. So on the real time, software can help us easily to understand that what is going on. We can see the clashes, we can see the where are the errors are coming. So software has these kind of capabilities
That's why we are choosing this software. That's why this software is in huge demand. Okay, some changes due to on-site conditions, some due to cost cutting, some due to availability of the materials. Yes, these are some conditions कि जिनकी वजह से आपका जो प्रोजेक्ट है वो हर बार एडिट होगा. ठीक है, सो इट इज़ नॉट कंपलसरी. दैट्स वाई वी नीड दिस सॉफ्टवेयर. ये ऐसा नहीं है कि हमने एक बार बना के छोड़ दिया, हम उसमें चेंजेस कर सकते हैं. That's why the softwares are important. That's why editing is important. You know, जो Revit है वो पूरी तरह से एक डायनेमिक प्रॉपर्टी कंटेन करता है. अगर आप एक चीज़ में चेंज करेंगे तो बाकी सब में चेंज हो जाएगा. और इंक्लूडिंग दैट वी कैन डिज़ाइन आवर ओन सिस्टम एज वेल विच इज़ कॉल्ड पैरामेट्रिक मॉडलिंग. ओके, आप में से जो लोग फेमिलियर है रेविट से और जो जिन्होंने आर्किटेक्चर या स्ट्रक्चर सीखा होगा वो एक बात से जानते हैं कि फैमिली क्रिएशन भी होता है सॉफ्टवेयर के अंदर. फैमिली तो हमें मिलती है अलग से, बट वी कैन ऑल्सो कैन क्रिएट फ्रॉम आवर सेल्फ. ओके, कि कैसे हम अपनी तरफ से खुद की फैमिली बना सकते हैं. वी कैन डिज़ाइन फ्रॉम दैट एंड वी कैन सेंड द डिटेल्स टू द कंपनी जो ये चीज़ें डिज़ाइन करती है. लाइक जैसे डाइकन हो गया या हायर हो गया, जो कंपनीज है जो ये सब डिज़ाइन करती हैं. लाइक जो चिलर्स हो गए, जो EHUs हो गए, या फिर जो FCUs हो गए, जो भी चीज़ें हैं वो हम कंपनी के पास डिटेल भेज सकते हैं एंड दे विल डिज़ाइन दिस थिंग इनटू देयर फैक्ट्री और एनीथिंग एल्स. जो भी है वो डिज़ाइन करके हमें सेंड करेंगे एंड दैट विल बी एग्जीक्यूटेड एंड विल बी पुट ऑन टू द जहाँ पे हमारा रिक्वायर है वहाँ पे. ठीक है, सो this is the power of the software. So we have to understand everything. ठीक है, this session is not all about कि we are just going to can we cover the parametric part? Yes, we are going to cover this part. Parametric part is included into our course, so we are also going to learn this thing. So it's not all about the designing the HVAC systems, it's not about the designing the plumbing systems, it's not about the firefighting designing. We are also going to design the components as well which are going to use into the designing work. Okay, so एक चीज़ ये भी समझ लीजिए कि that the softwares we have currently, जो भी हमारे पास सॉफ्टवेयर है उनकी हम कैपेबिलिटी पे भी जाएंगे. दैट वॉट वी आर गोइंग टू डिज़ाइन, हमारे पास प्लान्स भी रहेंगे. वी हैव सम मॉडल्स. ओके, सो आप में से जो लोग अभी करेंटली हमारा जो सीरीज़ फॉलो कर रहे हैं, ड्यू टू सम रीजन हम लोग इसका नेक्स्ट पार्ट भी जल्दी लेके आएंगे इफ़ आई गेट अ टाइम. तो जो इसका थर्ड पार्ट है उसमें हम प्लम्बिंग वाला पार्ट रहेंगे. जो लास्ट के दो पार्ट्स हैं वो आपने ज़रूर देखे होंगे. ठीक है, तो वो वाला जो मॉडल है वो हम लेने वाले हैं. तो यहाँ पे हम वापस आ जाते हैं. सो एज यू कैन सी द नेक्स्ट थिंग इज MEP स्टैंड्स फॉर. ओके, लेट्स डिस्कस ईच थिंग. दैट इज़ द मैकेनिकल विच स्टैंड्स फॉर द हीटिंग, वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशनिंग. ओके, इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स, E stands for electrical, and P stands for plumbing. Okay, so here comes the main question. Why we should learn Revit MEP? हमें MEP सीखना क्यों चाहिए? Why we should learn it? How many of you are going to answer this question? Let's see. Save the time. Okay. Save the cost. Emerging tech. Okay, visual analysis. Okay, anybody else? If you want to answer this question, you can unmute yourself and you can answer it properly. Okay, managing deadlines, better modeling, it helps to design and correction in the hassle free. Okay. It gives the package of MEP details. Okay, so maybe basically the answer is it is not a one line answer. Okay, am I right? कोऑर्डिनेशन बहुत इम्पोर्टेंट, कोऑर्डिनेशन रहेगा. Okay, yep, coordination is very important. Software allows team to arrange the schedules and manage deadlines to and perform the project management task in the most effective way. Get a good design engineer, we have to learn Revit. Okay,
Okay, so there is not a one line answer. See, if I tell you कि अभी के समय में we have to understand the demand of the industry. What is industry's demand? क्योंकि you know we are going as fast as we can. पूरी टेक्नोलॉजी जो है वो इवॉल्व हो चुकी है, एंड नाउ डेज द जो आर्किटेक्चर है वो नेक्स्ट लेवल की डिज़ाइनिंग कर रहे हैं आज के समय में. दे वांट वेरी हाई हाई यूनिक वेरी cool kind of design. But when it comes to the core depth engineering, okay, so we have to design them very properly, okay. And if we want to design them very properly, we need some very good kind of resources so that it can execute it very well. क्योंकि अगर हमारे पास वो रिसोर्सेज ही नहीं है, वी कांट एग्जीक्यूट देम वेरी प्रॉपरली. अगर आप देखें तो आज के ज़माने में ऐसे ऐसे डिज़ाइंस बन रहे हैं विच इज़ बियॉन्ड माई थिंकिंग, लाइक काइंड ऑफ लाइक जहा हदीद आर्किटेक्ट्स जो हैं वो तो आई हैव नो वर्ड्स फॉर देम, ओके. जो भी बड़े बड़े आर्किटेक्ट्स हैं विच आर डिज़ाइनिंग वेरी यूनिक वेरी यूनिकली. But when it comes to the core engineering, we have to take some risk, okay. So there are many challenges which we are going to face because we don't know. Because if we have designed our system, we have designed everything, but when we are going on to the site, the challenges are very different, situations are very different. If you have done case study of all all the building which have constructed in the past, they have faced many problems. Like if I tell you, आप में से जिस किसी ने बुर्ज अरब का एक केस स्टडी अगर पढ़ा हो तो जो ऊपर का आप में से जिसने नोटिस किया, जो ऊपर का जो होटल वाला डेक है वो बहुत बाद में बनाया गया है, एंड विच इज़ वेरी शॉकिंग कि उसको बाद में दिया गया एंड इट वॉज नॉट इंक्लूडेड इन दैट प्लान. सो there are many challenges which we have to face. So we need that resource which can handle this thing easily. एंड वॉट विल बी द कंसिक्वेंसेज, उसके क्या फ़ायदे हो सकते हैं, क्या नुकसान उसका हो सकता है. वी हैव टू सीन दैट फर्स्ट प्रॉपरली. बिकॉज एवरीथिंग जो भी, जैसे अगर कोई मूवी बनती है तो उसमें एक चीज़ होती है प्री विजुअलाइजेशन करके कि कैसे वो सीन एग्जीक्यूट होगा. सो वी हैव द प्री विजुअलाइजेशन विजन फ्रॉम दिस सॉफ्टवेयर. सो बिफोर एग्जीक्यूटिंग वी कैन सी दैट थिंग easily into that software ki how it is going to work. So Revit software can do this thing, okay. So this is how we are going to choose this software, okay. Demand first thing, second thing 3D visualization, okay. Third thing the vision it is going to provide from the Revit, okay. हम वहाँ पे एक अपना विजन डाल सकते हैं कि किस प्रकार से हम उसको डिज़ाइन करने जा रहे हैं. व्हाट इज़ आवर विजन कि इस प्रकार से उसको डिज़ाइन करना है सो दैट इट कैन मैनेज द सिस्टम. रिपेयर मेटेरियल शुड बी मोर इजी, मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव, ओके. स्टार्टिंग का जो प्रोजेक्ट है उसमें जितना अच्छे से कॉस्ट मैनेज हो वो सब कुछ हमने ये चीज़ पहले भी डिस्कस की है. सेम चीज़ ये इंपॉर्टेंस में भी आ रही है. तो यू कैन सी दैट एवरी डॉट इज़ कनेक्टेड, एवरी डॉट इज़ कनेक्टेड, एंड दैट्स वाई Revit MEP is important to learn as a mechanical engineer, as a electrical engineer, as a plumbing engineer, or as you are dealing into the firefighting. You have to learn this software because it has a very good scope. If you are going into the Gulf countries, especially because Gulf countries में बहुत डिमांड है MEP की. आप में से जो लोग Gulf countries हैं वो लोग तो जानते होंगे स्पेशली, और आप सब एग्री भी करते होंगे इस चीज़ से. Let me show you my screen, okay. During the maintenance of HVAC like FCU, HU is very very difficult due to lack of space and some very congested. Difficult is very difficult, okay, I know. क्योंकि limited amount of space होता है and there are many things to do. So we were discussing about the importance. So as you can see in this presentation, as an engineer you should learn the MEP because MEP gives you the idea of those aspects that we couldn't focus on, such as the mechanical engineering. We are going to focus on the duct layout, the air terminal fittings, the ASHRAE standard work. आप में से जो लोग HVAC जानते हैं वो इस स्टैंडर्ड को अच्छे से जानते होंगे. Cool heating and cooling load calculation, this kind of stuff we are going to do. So software is going to provide you the whole
vision that how we are going to design this thing, okay, how we are going to coordinate together to execute the project on the time, so that it can, you know, provide the best of the best. So it can be the durable, it should be durable, जो आपने कॉस्ट लगाई है वो परफेक्ट जगह पे लगे, और उससे जो रिजल्ट निकल के आए वो उससे आपका मतलब दोनों तरफ से एक विन विन सिचुएशन हो. So that's why we should learn Revit MEP, because it is not going to provide you the vision of the software as well as it is going to provide you a better future. Because you know, कमाई बहुत ज़रूरी है, आपको अपनी आमदनी भी चलानी है, यू हैव टू मेंटेन योर यू नो, आपको अपने घर के खर्चे भी चलाने हैं, और उसके लिए आपको एक जॉब भी चाहिए, है ना. और जॉब आपको तभी मिलेगी जब आपके पास स्किल होंगे, और स्किल तभी होंगी जब आप सीखोगे कुछ, यू नो, यू हैव टू लर्न. आपके अंदर एक लर्निंग जो है वो अंदर से आनी चाहिए कि यार ये सॉफ्टवेयर है क्या है, चलो सीखते हैं इससे क्या कर सकते हैं हम. सो सॉफ्टवेयर कैन प्रोवाइड यू अ गुड फ्यूचर, ओके. एज एन इंजीनियर यू कैन लर्न लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम द सॉफ्टवेयर कि हाँ यार ये भी होता है इसमें, यार चलो ये भी होता है, एक इंटरेस्टिंग चीज़, हमें एक इंटरेस्ट आता है वो सीखने में. सो सो इट इज़ गोइंग टू प्रोवाइड यू अ गुड फ्यूचर फॉर योर बेटरमेंट. आपके लिए एक बेहतरीन फ्यूचर आपको प्रोवाइड करवाएगा. हो सकता है स्टार्टिंग में यू आर नॉट गेटिंग मच सैलरी, मे बी, आई कैन एग्री ऑन दैट, ठीक है, आपको एक अच्छी स्टार्टिंग सैलरी में कोई नहीं देगा, बिकॉज कंपनी इज़ नॉट गोइंग टू टेक अ रिस्क ऑन यू. नहीं चाहते वो लोग कि वो ऐसे लोगों को हायर करें, बिकॉज फ्रेशर आर यू नो काइंड ऑफ रिस्क. because I'm working in the industry and I know I have worked, because in the starting days I have seen these things कि जब स्टार्टिंग में मैं भी कभी इंटरव्यू के लिए गया था तो आई हैव फेस्ड सम रिजेक्शन, बिकॉज दे नो कि जब हम फ्रेशर को हायर करेंगे तो वो क्या क्या गलती करने वाले हैं. एंड आफ्टर डूइंग सो मच वर्क इन टू द इंडस्ट्री आई नो कि during when you are working into the industry you can't make any mistakes, and mistakes are much should be avoided as it can, okay. So basically Revit MEP, this course is going to provide you everything you want. It is going to provide you a vision for your future, it is going to provide you a skill about to handle the software, it is going to provide you the knowledge about the, you know, all the systems which you are going to dealing with into the you know, construction industry and all that stuff. So basically this is our course all about, okay. So यही था हमारा आज का पूरा सेशन, ओके. सो ऑलमोस्ट टाइम इज़ ऑलमोस्ट ओवर नाउ, समय की जो सीमा है अब वो यहीं पर ही ख़त्म होती है, ओके. अभी जो बचा हुआ एपिसोड है हम उसको नेक्स्ट डे कवर करेंगे. सो आई होप यू हैव एन्जॉयड द सेशन, okay. So let me tell you one thing ki this is not course about you are going to, this is not going to be like any other kind of professional thing, but let's enjoy the course, okay. Let's enjoy just like we are going to we are going on a vacation to learn lot of things, okay. ठीक है, इसको एज एन वेकेशन की तरह समझो, इसको एज एन रोलर कोस्टर की तरह समझो, बिकॉज वी आर गोइंग टू एंजॉय एवरीथिंग, ओके. हाँ, यस, आप में से किसने यस क्या है? हाँ, बोलिए, कुछ बोलना चाह रहे थे? यस एंजॉय करेंगे सर कोर्स को अच्छे से आपके साथ. Good. Okay, okay, okay. So thank you for joining our session. So let's meet tomorrow, and I hope आप सबने आज का जो सेशन है वो काफ़ी अच्छे से you know enjoy किया होगा. Okay. So thank you for joining the course, and I hope you have enjoyed it very well. So कल हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे, and ठीक है. थैंक यू. ओके सर. हाँ, थैंक यू फॉर थैंक ज्वाइनिंग. यू सो मच. ओके सर, बाय. बाय बाय. ओके सर, बाय. गुड नाइट. गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट. थैंक यू. यू कैन लीव नाउ. थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग एवरीबडी. आप सभी अब लीव कर सकते हैं. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू वेरी मच.